Hello. 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 Yes, ma'am. Okay. Okay. Namaste. I'm Dr. Sunita Bhati, Associate Professor in Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. So, Namaste, ma'am. namaste. So today we will discuss about cyber security, and this is our first session about cyber security. So all of you are from computer science background or not? Please tell me. Hello. Are you comfortable with English? Yes, ma'am. Okay. So today we will discuss about some concepts related to cyber security. So I'm sharing my screen. Okay. It will take few seconds, so please wait. Okay, sure, ma'am. Is it visible? Is it visible? Yes, ma'am. Cyber security. Yes, Oh, ma'am. okay. Good. Okay. So first of all, what is cyber security? Actually, this is a very large field which consists of technologies, various types of technologies, processes, and controls algorithms to protect system, networks, programs, devices, and data from cyber attack. Actually, nowadays it is a very big problem of cyber attacks. So cyber security is a field that provides various types of algorithms, various types of tools to protect our network, our systems, hardware devices, or software programs. Okay, so this is a cyber security, basically concept of cyber security. And cyber security of actually people generally confused this term is only related with the information security, but it is not only related to the information security. Cyber security focuses on protecting computer systems from unauthorized access or being otherwise damaged or made inaccessible. Means cyber security focus on protecting our computer system, hardware devices. You can say your monitor particular, your camera, your security system actually. So if we are protecting hardware components, then this comes in cybersecurity. And the another part that comes in cybersecurity, that is information security. So information security is basically related to data transmission and software applications through which we can access data, we can share data. So information security,
this term basically is used for protecting our information over the internet, where we are passing our information, we are transmitting our data from one system to another. Now, the next term that comes in our in today's session, that is e-commerce. E-commerce is a very common word. It is just related to buying and selling of goods and services over the internet. It is conducted over computers, tablets, smartphones, and other smart devices. Actually, commerce, this concept is just using by the people for online selling, buying activities. Okay, almost anything can be purchased through e-commerce today. It can be a substitute for brick and mortar stores through some business choose to maintain both. E-commerce operates in four market segments, including business to consumer, consumer to consumer, and consumer to business. In today's session, I will just give you some overview about this, and other session later we will discuss in deep these all terms. Okay, so e-commerce is a in e-commerce, what is security system, and what is the use of security system during if you are selling or buying products, then what is the security system that is used over in e-commerce site. So security is an essential part of any transaction that takes place over the internet. Okay, following are the essential requirements for safe e-payments or transaction. Basically, the main focus over e-commerce site is security system for payment transition. Okay, so what are the requirement of security? What type of security is required in payment or transaction system? Confidentiality, integrity, availability, authenticity, non-reputability, encryption. These are the basic terms. Okay, so what is confidentiality? Information should not be accessible to an unauthorized person. That is confidentiality. It should not be intercepted during the transmission. Means, if you are transmitting your information over the internet, you are passing your important data over the internet via mail or other social media uh, options, then your information should be confidential. If any other third party or intruder wants to access your information, then if they attack, the person attacks over that data or over that file, then it cannot be it he cannot be convert this particular message, uh, or you can say it can he could not be able to uncover the message, because it is confidential and it is in encrypted format. Actually, that message which is transforming over the internet is an encrypted format. So the person cannot see that particular message. If he tries to see that message, the another format will appear in front of him, that could not be understandable. Okay, so this is the concept of confidentiality. What is integrity? Integrity: information should not be altered during its transmission with the network. Means, if a third party person or intruder or attacker or hacker wants to take or access your information, and if he want to alter that information, then the message cannot be changed. That is integrity. Your message,
Your information cannot be changed by the intruder. That is the concept of integrity. Now, the next term is availability. Information should be available wherever and whenever required within a time limit is specified. Means if you are yeah, for transmitting some information over the internet, then it could be if you are sending to a person, then whatever the time limit, it can be accessible by that person, received by that person. Okay, so your information is available for that person particularly. Authenticity means your whatever the message you are forwarding or you are sending to another person over the internet, that message is authenticated. Means it means it is not altered during transmission, so it can be confirmed. It can be confirmed by receiver that this is the particular authenticate message. There are so many techniques to confirm authenticity. So any person who are receiving that particular message over the internet, the message is authenticate, that concept can be applied. Authenticity is required. Okay. Non-reputability, it is the protection against the denial of order or denial of payment. Once a sender sends a message, the sender should not be able to deny sending the message. Similarly, the recipient of the message should not be able to deny the receipt. Okay, it is a very simple concept. Non-reputability is a concept through which we can confirm that the message sent by this particular person, and we also can confirm that the receiver received this message. That can both the circumstances, in both the circumstances, we can confirm. Sender cannot deny that the particular message sent by him not sent by him, and the receiver cannot deny that he did not receive any message like this. Okay, so this is non-reputability. And the next is encryption. Actually, encryption is a very popular technique through which we can convert our information or actual message into ununderstandable form or unintelligible format, so that that message cannot be understood by the third party. Okay, so this is known as encryption. If you are converting your message into another format, that is called encryption. And the reverse concept is decryption. Actually, decryption means if your coded message you are converting into original message, then it is this concept is called decryption. Means in decryption we convert a coded message or encrypted message into understable format or original format. That is decryption. So both the terms related to the information security. Now, measures to ensure security. How you can ensure your security? So the most important term is encryption. I already told you. I have discussed. I have given a small idea about encryption. What is encryption? It is a very effective and practical way to safeguard the data being transmitted over the network. Sender of the information encrypts the data,
using a secret code, and only the specified receiver can decrypt the data using the same or a different secret code. Okay, so encryption. What is encryption? Again, I'm repeating. What is an encryption? Actually, encryption is a technique through which we can transform transform our information into unintelligible or coded or ununderstandable format, so that the third party, or you can say hacker, attacker, or intruder cannot understand the message over the internet. If he or she wants to access the information, and if he will try to uncover the message, or he wants to read the message, he can't do that. Okay, because it why? Because it is an coded format. So this is the encryption is a technique through which we can we can we can transform our information into coded format. Now, how we can do that? How we can perform encryption? Actually, encryption, there are so many algorithms developed by different cryptographers, through which we can encrypt our information, our message, our files, our documents, and we have to provide a key, secret key, to encrypt that particular document. Okay, so by using that algorithm and key, encryption can be performed. Now, when receiver receive that particular coded message or encrypted message, what he should do? Actually, when receiver receive this message, he or she has to convert this encrypted message into decrypt format, or you can say understable format, by using an algorithm and the same secret key which is shared by the sender. Okay, receiver can decrypt the message only by using that particular key that is shared by the sender. Okay, so this is the basic concept. Actually, there are so many methods when there are two different keys, public or private. So we will discuss in later sessions what is we will discuss in later session what is a public key and private key. Yes, क्या हुआ? चल तो रहा है, आवाज तो आई थी। हाँ, स्टूडेंट्स की आवाज आई थी। हेलो। Hello, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. You are finally audible. ओके, Hello. यस यस यस, ओके। कहाँ चले? Okay. So what is encryption and decryption? Are you getting my point? What is encryption and decryption? Okay. So now come to the next point, digital signature. This is also a security concept, data security concept. Digital signature ensures the authenticity of the information. Actually, we have discussed about encryption. What encryption provides? Encryption provides confidentiality. Your message is confidential. Nobody can read that message over the internet because it is in a coded format. Now, the second concept for security is digital signature.
So, what is digital signature? Digital signature ensures authenticity. Authenticity, I already discussed about authenticity. Authenticity means when your data is transmitting over the internet, and any third party, if any third party want to access and modify, alter that particular information, if if somebody change your message over the internet and sends to the receiver, then receiver can ensure that this is authenticate or not, this message is actual or not, because of this digital signature concept. Digital signature is a technique or is a concept through we can provide authenticity to our information, our message, or our document, whatever you are transmitting over the internet. Okay, how this authenticity can perform, how you can perform authenticity. Actually, there are so many algorithms that is used for as a digital signature algorithm to create digital signature. Actually, in Word, nowadays in MS Word or Excel, you can create your own digital signature, but internally there are so many algorithms, there are some algorithms used to create a digital signature. We can directly convert our information into digital with digital signature, but internally there are some algorithms used for converting that message as a digital signature. Okay, so authenticity is there. Receiver can confirm that this message is authenticate or not. A digital signature is an e-signature, you can say, authenticated through encryption and password. We have to provide password to convert our message into digital signature. Now the next is security certificates. Security certificate is a unique digital ID used to verify the identity of an individual, website, or user. So now we will discuss about digital signature in detail. A digital signature is a mathematical technique used to validate the authenticity and integrity of a message. Integrity means message is not altered, message is original, that is integrity. Software or digital document. Okay, you can it is a mathematical technique through which you can validate the authenticity and integrity of a digital document or software or message. It's the digital equivalent of a handwritten signature or stamped seal, but it offers far more inherent security. Actually, it is just like a stamp seal, or you can say handwritten signature type document, but it is not. But there are so many other features also with included with the digital signature. Digital signature can provide evidence of origin, identity, and status of electronic documents, transactions, or digital messages. What it means if you are creating electronic document or transactions or digital message, if you are creating any document, any file on the laptop, or you can say on the computer, you can create its digital signature, and digital signature ensures your origin. You are what is the origin of this particular document, your identity and status also. Creating a digital signature. A digital signature is a type of electronic signature that adds a security feature through encryption. इसमें
सिक्योरिटी फीचर ऐड होता है और इसमें इंक्रिप्शन टेक्निक यूज होती है. इट यूजेस पब्लिक कीज इंफ्रास्ट्रक्चर PKI that requires keys to be created and saved in a secure manner. Okay, through when we want to create this type of digital signature, we have to use public key infrastructure. Public key infrastructure is you can say it is just like an organization that provides public key or private key for creating or for generating digital signatures that requires keys to be created and saved in secure manner. Digital signatures also provide features such as timestamps to maintain the integrity of documents. To digitally sign a Word document, for example, to digitally sign a Word document, the user must have current digital certificate, typically issued by a certificate authority, CA, certificate authority. This digital certificate is issued by certificate authority. Certificate authorities are third party organizations that issue trusted certificates to other entities. Global Sign is an example of CE that makes digital signature accessible to organizations via a seamless integration with Adobe Sign. After our organization accomplishes the identity verification process, you may easily acquire certificate from Global Sign and create signature automatically within the trusted platform. Global Science digital signatures can also be created using Microsoft Word. Follow these steps to create a visible digital signature and Word. Actually, there are so many methods through which you can create digital signature, and there are so many organizations that provides digital identity or public keys or digital certificate to any user who wants to take this facility. Okay, so you can create directly your digital signature in Microsoft Word. So how you can create your digital signature using Word, we will see the steps here. Find where the signature is needed and insert a signature line. First step is this. First of all, you have to open the Word and you will apply, you have to set the cursor where you want to apply the signature, digital signature, and add information. Second is add information about the signer, name, title, whatever you want to add. Right click on the signature line and click sign. You may upload an image of your signature. Actually, whatever signature you want, you can also upload your signature, your image or any type of image to show your signature. On the signing as box, click change. Ensure that you choose the right digital certificate and populate the additional information required. Click sign option and fill in your password. After successfully accomplishing these steps, the document is now saved with with your visible digital signature. Any changes to the document will make sure your signature is invalid. This is just about a simple introduction about encryption, decryption, e-commerce, digital signatures,
So I'll just show you how we can create this particular digital signature in Microsoft Word. First of all, you have to open this. Actually, this is 2007 version. Yeah, this is here. Okay. So first of all, if you want to create your digital signature, you have to prepare your document. You have to write something in your document. Suppose this is your document you have created, and you have to apply your digital signature here to for security purpose. Okay. Hello. सर वही खुला हुआ था ना, RW वाला, R.CW वाला है ना सर? हाँ सर, आज चल भी रहा है, मैंने पूछा भी है। आपका आवाज सुनाऊं क्या स्टूडेंट्स की सर? ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? Yes, ma'am, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। Yes, ma'am. और ये मैम स्क्रीन, दोनों मैम लेक्चर दोनों लैंग्वेज में करवा दिया करो नहीं। अच्छा हिंदी में भी बोलना है क्या? हाँ Yes, यस ma'am. मैम, हम कई मैंने, स्टूडेंट हिंदी बैकग्राउंड से हैं। ओके कोई बात नहीं, तो मैं ये हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मुझे पता नहीं था ना, मैंने बोला इसीलिए था कि आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हो क्या, इसीलिए मैंने पूछा था, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा अभी आपको हिंदी में भी इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। थैंक यू मैम। ओके Thank you, ma'am. ओके ओके फाइन। तो पहले तो मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर एक्सक्यूज मी, ओके। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके ओके। तो अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करना है, आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके। अगर आप, हाँ बोलो। प्लीज अनम्यूट करिए आप अपने आप को, सॉरी म्यूट कर दीजिए आपको अपने आप को, क्योंकि ना यहाँ पे आवाज आ रही है कहीं से। ओके
तो हमें डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करना है। हम डिजिटल सिग्नेचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए। हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कुछ भी टाइप कर लो, कोई भी मैटर है आपका या कोई भी इंफॉर्मेशन है, फाइल है जिसको आपको डिजिटल सिग्नेचर देना है या क्रिएट करना है, आप कर सकते हो। आपको जस्ट मैटर तैयार करना है एंड जहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आपको लगाना है, आपको सेटिंग करना है कर्सर को, और इंसर्ट ये जो मेन्यू है वहां पे जाकर के सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ है सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर सर्विसेज फ्रॉम ऑफिस, इस पर ओके कर देंगे इसको। ओके, एक्चुअली इसमें प्रोसेस नहीं हो रहा है तो ओके ओके फाइन। इसमें ये फैसिलिटी क्यों नहीं आ रही है? हाँ, फैसिलिटी नहीं आ रही है क्रिएट करने की। हाँ, यस, ओके। So first you will click on OK button and then suggest signer example। आपका नाम लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, साइनर का नाम। तो आपको नाम जो भी देना है आप नाम दे दीजिए यहाँ पे सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए। सिग्नेचर का कोई टाइटल देना है, जैसे कंपनी का नाम दे दिया, इन्फो टैग कर दिया, कुछ भी टाइटल देना पर्टिकुलर कि ये जो डॉक्यूमेंट है किससे रिलेटेड है, उस डॉक्यूमेंट का पर्टिकुलर कोई टाइटल आपको देना है। आपको अपना ईमेल आईडी देना है, आप इसमें दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ABC जो भी आपका ईमेल आईडी है। अगर आप वाकई में क्रिएट कर रहे हैं अपना डिजिटल सिग्नेचर उसके अकॉर्डिंग। ओके, अलाउ साइनर, इसको अलाउ कर दीजिए। ओके, इसको अलाउ कर दीजिए, ओके कर दीजिए। It will take few seconds. The processing is going on. That's why कुछ समय लगेगा आपको। और ये जो अभी जो मैंने पीपीटी के अंदर समझाया है सारा, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हिंदी में भी उसको बता दो, तो मैं हिंदी में भी इसको जल्दी जल्दी अभी आपको ओवरव्यू दे दूंगी। ओके, मुझे पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही आपको बताती। ओके, सो दिस इज डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ पे ये दिया था नाम और ये इन्फोटेक, तो ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो साइन पर क्लिक करके कोई इमेज अगर आपको डालनी है तो आप यहाँ पे कोई इमेज डाल सकते हो, ठीक है। पर्पज ऑफ साइनिंग डॉक्यूमेंट वो आप दे सकते हो। अगर आपको इमेज डालनी है तो सेलेक्ट इमेज करोगे, कोई भी इमेज सेट करनी है आपको, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे हम। अगर यहाँ पे कोई इमेज होगी तो वो सपोज ये इमेज है। ओके, पर्पज ऑफ साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट, कुछ भी लिख दो अभी, तो जो भी आपका पर्पज है वो, और साइन पर क्लिक कर दो। ओके, सिग्नेचर सेटअप ये हो गया। इसमें एक बार इसको आपको सेव कर देने का है, और उसके बाद अब जैसे हम इसको सेव करेंगे एंड देन इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम इसको रीओपन करते हैं। ओके, नाउ
This document needs to be signed. View signature. एक minute. This is signed by this person. Okay, this is signed by this person. Now ये जो है ये डिजिटल सिग्नेचर ये हमने डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे क्रिएट किया और क्रिएट करने की जो प्रोसेस है वो मैंने आपको अभी पूरी बताई. इसको हम क्लोज करते हैं और डू यू वांट टू सेव चेंजेस? यस. ओके, जो भी चेंजेस हमने किए हमने इसको सेव कर दिए. तो ये है प्रोसेस इसको क्रिएट करने की, डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने की. नाउ तो ये डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करना आई थिंक आ गया होगा आपको, और वैसे भी लेटर क्लासेस में हम इसको डिटेल में और पढ़ने वाले हैं. डिजिटल सिग्नेचर को सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. ये आज का ओवरव्यू था. तो अब इसी को मैं हिंदी में बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हुई समझने में. तो हम इसको देख लेते हैं. साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी एक यूँ कह सकते हो एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, टूल्स हैं, जिसके थ्रू आप अपने इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है उसको, चाहे वो आपके सिस्टम में है, चाहे वो आप ट्रांसफर कर रहे हो कहीं पे भी, इधर उधर भेज रहे हो आपका मैसेज, डेटा, या फिर आपका जो पर्टिकुलर सिस्टम है, आपका जो हार्डवेयर डिवाइस है, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए. और ये बहुत ज़रूरी है. साइबर सिक्योरिटी की क्यों जाती है? बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है आजकल साइबर अटैक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. हर जगह इंफॉर्मेशन की स्टीलिंग हो रही है, चोरी हो रही है, और उसका फिर मिसयूज होता है. तो सिस्टम को भी हैक कर लिया जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम को ही हैक कर लिया जाता है, रिमोट एक्सेस कर लिया जाता है. आपने अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन कर रखा है, लैपटॉप ऑन कर रखा है, तो उसको कोई अदर पीपल हैक करके और उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, आपकी वेबसाइट्स लॉक हो जाती है. तो ये सब साइबर अटैक्स हैं. तो इन सब से साइबर अटैक से आपके सिस्टम को बचाने के लिए या आपकी इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट आया है. और इसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजीज, टूल्स और एल्गोरिथम्स हैं जिनका हम यूज करते हुए साइबर अटैक से अपने इंफॉर्मेशन और सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो दो तरह से होती है ये साइबर सिक्योरिटी जो है. इसमें बेसिकली दो तरह की सिक्योरिटी है. एक तो डिवाइस लेवल पर सिक्योरिटी और एक इंफॉर्मेशन लेवल पर सिक्योरिटी होती है. डिवाइस लेवल पर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपके हार्डवेयर डिवाइस को, जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको कोई हैक न कर ले, पूरा का पूरा सिस्टम ही डैमेज ना कर ले, कोई आपके सिस्टम में एंटर होकर के अदर पीपल रिमोट एक्सेस करके और उसमें चेंजेस कर ले, उसको लॉक कर ले, उसका डेटा चोरी कर ले. ऐसा नहीं कर सकता. तो सिस्टम पर अटैक. और दूसरा है इंफॉर्मेशन का. जैसे इंफॉर्मेशन है आपकी इधर उधर ट्रांसमिट होती है नेटवर्क पर, इंटरनेट के थ्रू, तो उस पर अटैक करना. तो इंफॉर्मेशन को, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर बाय यूजिंग एल्गोरिथम्स, टूल्स एंड टेक्निक्स. फिर उसके बाद एक टर्म आई थी ई कॉमर्स. तो जानते ही हम सभी कि आजकल ई कॉमर्स के थ्रू, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मीन्स बिजनेस. ओके, तो ई बिजनेस जो समझो, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो कि ऑनलाइन जो भी बिजनेस होते हैं, इंटरनेट पर जो भी इंटरनेट के थ्रू बिजनेस किए जाते हैं, बाइंग सेलिंग कंसेप्ट जो होता है इंटरनेट पे, गुड्स का, सर्विसेज का, ठीक है, वो ई कॉमर्स के अंदर आता है. और ई कॉमर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हम किसके थ्रू कर सकते हैं? टैबलेट पे भी कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स, वेबसाइट्स को ओपन कर करके. ये हम किसी भी सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, स्मार्ट डिवाइसेस में इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, और ये बिजनेस टू बिजनेस भी होता है. ये कुछ टर्म्स हैं.
ई कॉमर्स के लिए बिजनेस टू बिजनेस का मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है और या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से खरीद रहा है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग और बाइंग होगी। इधर बिजनेस टू कंज्यूमर सेलिंग और बाइंग होगी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी सेलिंग टू बाइंग होती है एंड कंज्यूमर टू बिजनेस भी होती है। तो ये इस तरह से ई कॉमर्स हर तरह से आप कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी और नॉन रेप्यूटेबिलिटी आपको समझाया था एंड देन उसके बाद एन्क्रिप्शन समझाया था। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, मतलब आप उसको भेज रहे हो कहीं पे भी इंटरनेट पर और बीच में कोई भी थर्ड पार्टी या अटैकर उसको हैक करता है और उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, अनकवर करने की कोशिश करेगा, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में है, तो वो उसको अनकवर नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये जो उसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक है इंफॉर्मेशन की, क्योंकि आपने इनक्रिप्ट कर दिया उसको, तो वो इसका जो ये फीचर है दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपका मैसेज कोई कॉन्फिडेंशियल है, कोई पढ़ नहीं सकता। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब उसको चेंज नहीं किया गया, चेंज नहीं कर सकता। आपके जो डेटा की इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता कोई। अवेलेबिलिटी, आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जहां पर आपको रिक्वायर है वहां वो अवेलेबल है। अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं तो वो आपको रिसीव हो रही है, दैट इज अवेलेबिलिटी, आपकी इंफॉर्मेशन एनीवेयर अवेलेबल है। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी का मतलब यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी का मतलब है ई कॉमर्स के सेंस में, अगर हम अवेलेबिलिटी देखें तो हर जो भी इंफॉर्मेशन डाली गई है वो आपके लिए इजीली अवेलेबल है ई कॉमर्स साइट पर जो आप देखना चाहते हैं। ऑथेंटिसिटी का मीनिंग कि आपका जो मैसेज है या इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिकेट है। ऑथेंटिकेट का मतलब है कि यू कैन कंफर्म दैट कि दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज ओरिजिनल, मीन्स ये चेंज नहीं हुई है, ये ओरिजिनल है, यू कैन कंफर्म थ्रू ऑथेंटिसिटी। नाउ नॉन रेप्यूटेबिलिटी, नॉन रेप्यूटेबिलिटी जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम ये कंफर्म कर सकते हैं, या यूं कह सकते हो उल्टा, अगर हम देखें कि सेंडर जो है वो मना नहीं कर सकता कि ये मैसेज उसने सेंड किया, और रिसीवर ये मना नहीं कर सकता कि रिसीवर ने वो मैसेज रिसीव किया है। तो ये कंफर्मेशन कि ये मैसेज इस पर्टिकुलर सेंडर से आया है और ये कंफर्मेशन कि ये मैसेज इस पर्टिकुलर रिसीवर ने रिसीव किया है, तो बोथ कंफर्मेशन अगर करता है तो ये जो फीचर है ये कहलाता है नॉन रेप्यूडिएबिलिटी। इसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन इट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिनायल ऑफ सर्विसेज, मतलब कोई मना नहीं कर सकता कि हाँ ये उसने नहीं भेजी, ये कंफर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज encryption. Yes, encryption नेक्स्ट स्लाइड में भी है, तो वो मैंने पहले भी बताया था। हाँ, मेजर्स टू इंश्योर सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी इंश्योर करना चाह रहे हो या करते हो, तो वो कैसे सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है? एक तो इंक्रिप्शन होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर फैसिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है उसके थ्रू आप कर सकते हो। आपका मैसेज या आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर है, आप कैसे बता सकते हो? अगर वो इंक्रिप्शन कॉन्सेप्ट लगा हुआ है उसमें, या डिजिटल सिग्नेचर है, या सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप उसको क्या कह सकते हो? आप उसको सिक्योर कह सकते हो। तो इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम अपने डेटा को, या एक ऐसा और यू कह सकते हो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम हमारी इंफॉर्मेशन और डेटा को एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और वो फॉर्मेट कोई भी समझ नहीं सकता, हम खुद भी नहीं समझ सकते। ऐसा फॉर्मेट में हम अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देते हैं जिसे हम खुद भी नहीं समझ सकते, मतलब एक ओरिजिनल मैसेज को अनइंटेलिजिबल फॉर्म में, मतलब जिसको समझा नहीं जा सकता, उस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। और उसको ना तो हम समझ सकते हैं ना कोई और समझ सकता है उस फॉर्मेट को, तो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर हो गई। अब कोई भी उसको देखेगा तो उसको मतलब एक अलग ही लैंग्वेज दिखेगी, जो लैंग्वेज किसी के भी समझ की बात है, मतलब कोई भी नहीं समझ सकता उसको। ठीक है, तो हम
एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। एनक्रिप्शन इज अ टेक्निक, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम हमारी इंफॉर्मेशन को एक अनइंटेलिजिबल फॉर्मेट में, या जिसको कोई समझ नहीं सकता ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और डिक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, इसका उल्टा, जो हमारा अनइंटेलिजिबल या कोडेड मैसेज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम वापस से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है डिक्रिप्शन। तो सपोज ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक सेंडर है, उसको मैसेज सेंड करना है, ठीक है, तो मैसेज को इनक्रिप्ट करके सेंड कर रहा है, तो वो मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ गया, रिसीवर के पास। रिसीवर उसको डायरेक्टली नहीं रीड कर सकता, रिसीवर के पास वो मैसेज डिक्रिप्ट होगा पहले, और फिर डिक्रिप्ट होने के बाद वो ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो उसको समझ लेगा। तो ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस होती है जो इस सिक्योरिटी का मेजर है। नाउ डिजिटल सिग्नेचर के बारे में तो हमने अभी डिस्कस किया ही था कि डिजिटल सिग्नेचर जो है ये ऑथेंटिकेशन बताता है कि आपका मैसेज ऑथेंटिकेट है। देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। कॉन्फिडेंशियलिटी में डेटा कॉन्फिडेंशियल रहता है, मतलब उसको कोई पढ़ नहीं सकता। और डिजिटल सिग्नेचर के अंदर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड होता है, पढ़ तो सकता है कोई भी उसको, अगर मान लो एनक्रिप्टेड नहीं है तो पढ़ लिया, डेटा आपका जा रहा है एनक्रिप्टेड फॉर्म में तो पढ़ लिया। अगर पढ़ लिया तो वो उसको अगर चेंज करता है, मान लो थर्ड पार्टी पढ़ के डायरेक्ट भी सेंड कर सकता है वो इंट्रूडर, और उसको चेंज करके भी सेंड कर सकता है। तो फिर अगर पढ़ के खाली सेंड कर लिया, ठीक है, पढ़ के सेंड कर लिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ के उसमें कुछ मैसेज चेंज कर दिया, कुछ भी ऑल्टर कर दिया मैसेज, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि ये मैसेज चेंज्ड है, ये ऑल्टर किया गया है, ये ओरिजिनल मैसेज नहीं है। दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी। सो हमारा मैसेज कोई बीच में पढ़ के चेंज ना कर सके, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर कंसेप्ट आया है। डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है ऑथेंटिसिटी की कोई आपका मैसेज को चेंज न कर पाए। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज, ये एक और यूं कह सकते हो कि टेक्निक दी गई जिसके थ्रू आप अपनी डिजिटल यूनिक डिजिटल आईडी तैयार कर सकते हो, और जो आपकी वेबसाइट या आपका जो भी इंफॉर्मेशन है इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डिजिटल सिग्नेचर को, डिटेल में पढ़ा था शायद, ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ लिया। अच्छा, ये बैक में जा रहा है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है उसके बारे में तो ये हम पढ़ ही चुके हैं, मैंने बता ही दिया, और ये सब मैंने आपको हिंदी में बता ही दिया कि कैसे करना है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। आई थिंक आपको आज के सेशन में कुछ समझ में आया होगा, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो उस हिसाब से हम इसको कर लेते, और हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके उसको हम कर लेते हैं ना। नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिक्सअप करके और क्लास लूं। ओके, नाउ आई थिंक आपको आज के सेशन में समझ में आया होगा। यस मैम, will you share me PPT in WhatsApp and other mail? एक्चुअली हम लोग पीपीटी जो होती है ना हमारी, शेयर नहीं करते हैं किसी को भी। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड मैटर चाहिए तो हम वर्ड फाइल बना करके शेयर कर सकते हैं। Yes, ma'am. Please you share me what. तो अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो हम वर्ड फाइल से आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे इसके। Okay, मैम, थैंक यू मैम। मैम, मतलब हर सब्जेक्ट के नोट्स हमें प्रोवाइड होंगे, राइट? मैं इसका कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है कि सब प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, या यहाँ रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो ये अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके, सो आज की क्लास में आपको आई थिंक कुछ समझ में आया होगा कि क्या होता है एन्क्रिप्शन, डिजिटल। यस मैम, इट इज गुड क्लास। यस मैम। ओके, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू मैम। class is over now.
मैम और क्लासेस चलेगी क्या? मुझे लगता नहीं है कोई क्लास होगी। टाइम इज ओवर मैम। हाँ टाइम टाइम ओवर। टेबल, हाँ टाइम टेबल 3 o'clock का ही है केवल। ओके 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 सो ओके फाइन।
अभी चाल रही शायद कौन चाल रही वो देखो इंटरवल हो देखो फिलहाल इसके तहत लगभग 3.5 लाख परिवारों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। 8 लाख लगभग 212 करोड़ का भुगतान। ये रकम उनके बैंक अकाउंट में बढ़ेगा। मजदूरी और जलवा बढ़े त्योहार खुशी धोबी पुरोहित इसके काम करेगा। लोगों को सीधा पता मिलेगा। राजीव गांधी ग्रामीण भूमि विकृति मजदूर न्याय योजना राज्य सरकार की अद्भुत पहल है। इस तरह की योजना देश के अन्य राज्यों में कहीं कहीं नहीं। छत्तीसगढ़ मॉडल है बेमिसाल। जब लोगों की जेब में रखी जाती है तो इससे राज्य में तरक्की को रफ्तार होती है, बेरोजगारी कम होती है और समृद्धि बढ़ती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2022 के अंदर 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सेवा, जतन, सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार।